चला एक बात और, जैसे हम पहले मैं आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि फिल्मों का कनेक्शन, स्टोरी टेलिंग का कनेक्शन हम सबके साथ रहता है। किस तरह से आपका फिल्मों के साथ कनेक्शन रहा था जब आप एज ए यंग आर्टिस्ट मीडिया में आई हैं? देखिए, स्टोरी टेलिंग की अगर आप बात करें तो हर भारतीय कहीं ना कहीं स्टोरी कहानियां सुनकर बड़ा होता है और कहानियां सुनकर ही उसकी शाम बीतती है। और उसके बाद जब वो वही कहानियों को फिल्मों में देखता है, फिल्मों के जरिए अपनी छवि देखता है, तो उसे कहीं ना कहीं बहुत खास लगता है, बहुत जुड़ाव लगता है। और अभी हम देख रहे हैं हाल के समय में वही कहानियां, वही फिल्में ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जो आमजन से जुड़ाव रखती हैं, जिनका लोग अपने साथ कनेक्शन महसूस करते हैं। Exactly, we were talking to the international guest, and some of them mentioned like films like RRR, which have very strong ethos, very strong Indian ethnicity. तो चलिए अक्षय, अब हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को ऑडिटोरियम में और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। Enjoy it. Opening ceremony of Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Voot. हर साल की तरह इस साल भी इफी दुनिया भर की फाइनेस्ट फिल्म्स और वर्ल्ड सिनेमा के स्टेलर क्रिएटर्स को एक साथ लाया है. So let's begin and let's invite our dynamic host on stage. He is a very talented actor. He is at the top of his game when it comes to singing, writing, composing, and mind-blowing hosting. Please give a big round of applause for the maverick entertainer, a talent who is loved by millions in India, an actor par excellence, जिसे आता है महफिल को सजाना, the very amazing Apar Shakti Khurrana! हेलो गोवा, क्या हाल चाल है सबके? ओह माय गॉड, व्हाट अ हाउसफुल. और कोविड के बाद ऐसा हाउसफुल पहली बार देखा है. सो टच वुड, आई थिंक गुड थिंग्स कमिंग अहेड. सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि इस जबरदस्त शाम को होस्ट करने के लिए आपको लगा मुझे पड़ेगा बुलाना. Hi, my name is Apar Shakti Khurrana. It is indeed a great honor to be here in front of such an amazing audience. And hello and welcome to the prestigious Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa. Streaming free on Voot, Colors and Color Cineplex, brought to you by India's Information and Broadcasting Ministry and NFDC, and hosted by Government of Goa and Entertainment Society of Goa. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. And tonight's event is directed and produced by Wistcraft Entertainment Agency. And you know what? As a young boy, I used to eat, breathe, and love cinema. And now, to host an evening that marks the biggest celebration of cinema from across the world is a dream come true. So thank you for having me over. Tahe dil se shukriya aap sabka. Ladies and gentlemen, we have a lot in store for you today. But, before we begin, सबसे पहले करते हैं इस देश को प्रणाम, करेंगे सर्वप्रथम भारत माँ का सम्मान. Hence, I request everyone who all can to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
अब सिनेमा कहूं या मोशन पिक्चर, इसका नाम लेते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. There are only two types of people in this world. ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इसमें केवल दो तरह के लोग होते हैं. One who loves cinema and the other who only loves cinema. Because movies make everything all right. Believe me, to feel better, you don't need a medicine. एक मूवी का सीन ही असर कर जाता है. और हम इंडियंस अपनी फिल्म्स में बहुत प्राइड लेते हैं. You know what? क्योंकि फिल्म चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी या फिर तमिल, हम उसकी सक्सेस पे ढेर सारी सीटियां बजाते हैं. बहुत लंबा सफर रहा है हमारी इन सभी फिल्मों का. फ्रॉम नो कलर टू द सिनेमा फुल ऑफ कलर्स, फ्रॉम नो डायलॉग्स टू द बिगेस्ट डायलॉग बाजी, फ्रॉम सिंपल सिनेमैटिक फ्रेम्स टू विजुअल्स लोडेड विद एनिमेशन एंड वीएफएक्स, फ्रॉम राजा हरिश्चंद्र टू RRR. दादा साहब फाल्के साहब ने अपने हाथों में कैमरा क्या पकड़ा, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ने ऐसी हवा पकड़ी कि आज हर घर में बच्चे कैमरा उठाकर सिनेमा बनाने की सोच रहे हैं. We now live in a world where we create cinema and definitely cinema creates our world. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस सिनेमा के जगत के लिए. One of the finest makers, actors, directors, writers are here. And that's why हम यहां पर आए हैं to celebrate the joy of cinema in a fabulous magical land called Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Woot. So from today to the 28th of November, we will be showcasing some amazing films to you all from across the world, and believe me, these 9 days will be the most memorable 9 days of any cinema lover's life. And that is a promise of those who have made this fantastic event possible. Give it up for the Directorate of Film Festivals of the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with the Goa government. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. And thank you Goa government and IFI for providing us this fabulous platform and getting us all together. Okay, so मुझे लग रहा है रूम में एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है, काफी ज्यादा माहौल बन रहा है. So ladies and gentlemen, now it is time to kickstart the opening ceremony on a grand note. You know what? In India, every important occasion begins by inviting and worshipping Lord Ganesha. That is why we say, उत्सव बिना गणेश जी के लगता हमें अधूरा है. प्रथम वंदना अगर उनकी ना हो तो कोई भी काम नहीं होता पूरा है. तो चलिए गणेश वंदना प्रस्तुत करने आ रहे हैं the one who keeps her eyes on the stars and feet on the ground, जिनकी सिग्नेचर स्माइल करोड़ों इंडियंस के दिल की धड़कन बन चुकी है. Please welcome the actress who's racing to the top, one of my favorite actresses in the country. Please give it up for Mrunal Thakur. जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरन शुभ करन नविनता विघ्न हरन शुभ करन नविनता विघ्न हरन शुभ करन नविनता धुमकिट धलोंग धलोंग धनागिनता धलोंग धलोंग धनागिनता धलोंग धलोंग धनागिनता.
TP. Oh my God, what a performance. Give it up for Mrunal Thakur. Light represents the positive, the good and the good spirits. It symbolizes truth, knowledge and understanding. By lighting a lamp, the lamp becomes a form of fire and it ensures success. Hence, now I request the honorary dignitaries to please come on the stage and light the traditional inaugural lamp. Can we please have all of you on the stage? Shri P.S. Sridhan, Honorable Governor Goa. Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union IND Minister. Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister Goa. Mr. Puneet Kumar Goyal, Chief Secretary Goa. Mr. Apurva Chandra, Secretary of Information and Broadcasting. Steering Committee members, Bobby Bedi, Ms. Rishita Bhatt, Nikhil Mahajan, Prasoon Joshi, Ravi Kottakara, Shujit Sarkar and Vani Tripathi. And Mr. A.K. Beer, Technical Committee Chairman. May I please request all of you to light the lamp. I wish with all my heart that this light brightens up the path for world cinema for years to come, and may it guide us towards a path of telling some compelling stories which fills the hearts and lives of our audiences with hope and happiness. इफी को और शुभ बनाने के लिए ये शुभ लाइट जलानी अति आवश्यक है. Thank you so much, everyone. Thank you so much for doing the honors. Okay, so ladies and gentlemen, this edition of the festival promotes the art of film by providing a unique platform showcasing the best of cinema and providing an elevated cinematic experience with the power of Jio True 5G. इसलिए आगे बढ़ने से पहले to extend a formal welcome to all our distinguished guests, delegates and dignitaries, may I invite on the stage the Secretary of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apurva Chandra. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji, Minister of State, Shri L. Murugan ji, and all of those present here who are in the business of creating the magic of movies, and the others like me who are fans and enjoy and immerse themselves into the magic of movies. I welcome all of you to the 53rd edition of IFI. Before I begin, I would like to read a special message from our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for this event IFI. So this is a special message from our Honorable Prime Minister. It is heartening to learn about the 53rd edition of International Film Festival, organized jointly by the Ministry of Information and Broadcasting and Government of Goa from November 20th to 28th, 2022. For over a century now,
cinema has captured the imagination of people the world over. Cinema reflects the social dynamics of our times as well as shapes it. Films have a unique ability to transcend barriers and establish an emotional connect with the audience. Movies entertain, educate, or even inspire people through their powerful storytelling. Their efficacy in becoming a vehicle of social transformation is truly unparalleled. India is blessed with a rich and diverse culture, an amalgamation of tradition with the modern. The history and art of storytelling in various Indian languages, ranging from prose, poetry, music, dance, plays, dramas, to cinema, enables us to celebrate our vibrant socio-cultural landscape. IFI and Indian cinema have carved out a niche for themselves on the global stage. Films in different Indian languages are reaching out to a larger international audience and are being increasingly appreciated across the world. As the biggest film festival of India, IFI promotes an invigorating synergy between delegates from different nations and societies united by cinema. I know that the interactions within this mini world congregating at Goa will facilitate deeper understanding and new learnings in the world of art. With its beautiful nature and vibrant culture, Goa provides the perfect backdrop to host the IFI. I am sure that Goa will spur the creative imagination of the participants, inspiring them to come up with new ideas to help cinema expand its outreach in success. Signed, Narendra Modi. So after the inspiring words of the Honorable Prime Minister, where he has expressed confidence that IFI will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa, I would only add that IFI is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. This year, our Honorable Minister Shri Anurag Thakurji and Shri Muruganji visited Cannes Film Festival, and India was the first country of honor at the Marché du Cannes. We learned a lot from that visit, and this year we have tried to imbibe the learnings into the IFI at Goa. This and that you can see when the film market is going to be inaugurated tomorrow, where we have several countries, states and industry pavilions being put up. This is the first time ever that such a large participation is there. Very smart pavilions have been put up by France, Dubai, Russia and many state governments. And I am happy to announce that we have kept the entry open not just to the delegates of the film market, but also to the delegates of the film festival and also to the public of Goa between 3 and 6 p.m. every day. So we would like more and more people to come and visit this first ever effort at Goa. More than anything, a film festival is about films. This year, 280 films from 79 countries, 183 films will be part of the international programming. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने इस बार बहुत मेहनत से इन फिल्मों को चुना है, और मुझे आशा है कि जो लोग फिल्मों के कॉनोसियर्स हैं, जो फिल्मों को देखेंगे, वो फिल्म्स को अप्रिशिएट करेंगे कि इस बार की फिल्मों में कैसे बदल आया है, और हमारा जो गोवा का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है. सो शेवटी मी असं म्हणेन की 2 वर्षां
पर्यंत कोविड होता. यावर्षी आपण कोविडमधून निघालो आहोत आणि या वर्षीच्या इफी जे आजपर्यंतच्या इफी आहे त्यापेक्षा चांगला आहे आणि यापुढे दरवर्षी मी हमी देतो की यापेक्षा चांगला होत जाणार आहे. धन्यवाद. Thank you so much, sir. And now I would like to request the Honorable Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, to share a few words. Please welcome him on the stage. Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillai Ji, Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant Ji, Secretary INB Sri Apurva Sandra Ji, and senior officers from Ministry of Information and Broadcasting, government officials from Government of Goa, ESG, and team NFDC. And the stars, celebrities here, our parliamentarians here, filmmakers, juries, actors, directors, and all personalities associated with the world of cinema, delegates, guests, friends from media, ladies and gentlemen, Namaste, Vanakkam to you all. Welcome to this Asia's biggest film festival, the 53rd International Film Festival of India at Goa. Over the next 8 days, the film-loving delegates coming from all across the globe will enjoy the best of India and the world cinema. Away from the side of global COVID pandemic, this 53rd IFFI will be back to its vibrant festival Avadar. Mr. Carlos Saura, the famous Spanish film director and writer, has been selected for this year Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022. Mr. Saura, congratulate to you. Your contribution to the world of cinema over last 50 decades is unparalleled. I pay my respect to late Lada Didi, Pandit Birju Maharaj, and Tabussam, many others from the film fraternity who left us in last 1 year. We remain indebted to you forever. Ladies and gentlemen, in 1913 was the year when India started our journey in the world of cinema. Our movies picked the threads from our rich history and culture, our diverse regions and languages, and created the Indian cinema, whose influence today transcends beyond boundaries, beyond culture, and beyond language barriers. Sri Dada Sahib Phalke ji, Sandaram ji, Sri Raj Kapoor, Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Dr. Rajkumar, and many others have literally carried the movie world over their shoulders, and today many from the distinguished audience here are able continuing this tradition. The journey started with Raja Harishchandra and traveled through Do Bigha Jameen, Bandini, Kagaz Ke Pool, Veerapandiya Kattabomman, Padagoti, and other gems. These movies become the milestones in the journey, enhancing the appeal of Indian cinema the global scale. Friends, it is motto of Vasudeva Kudumbam. The whole world is the family. The IFFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other
explore the possibilities to collaborate and promote understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The IFFI is about celebrating and releasing good cinema. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has described the IFFI as the film festival that promotes an synergy between delegates from different nations and society united by cinema. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds, and most importantly, the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. Honorable Minister Shri Anurag Singh Thakur ji is leading the front to establish India's position as the content hub of the world. Many initiatives like incentives for co-production in India, streamlining single window film facilitation service, incentives film shootings in India, tapping the huge AVGC potential and marching ahead under his able leadership. Let me also acknowledge the great contribution of state of Goa. Let Sri Manohar Parrikarji's sustained effort made Goa as the permanent venue of IFFI. I salute his vision. The Goa state under the dynamic leader of Chief Minister Sri Dr. Pramod Sawant has put his tremendous effort to make this IFFI 53rd successful. Dr. Pramod ji, your concerned support for this cause is great source of strength of the IFFI. This warmth and hospitality of Goenkas is world famous, so enjoy the Goengan hospitality and get immersed in the IFFI. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vanakkam. Thank you so much, Murugan sir. Always great to hear your thoughts. And now it is time to felicitate our international jury of this year. For that, I would like to request our Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to please come on the stage. The international jury for the festival chose a total of 15 films this year, 12 international and 3 Indian films to compete for the prestigious Golden Peacock Award at Geo True 5G presents 53rd edition of the International Film Festival of India, Goa, streaming free now on Woot. As we know, each year a group of renowned filmmakers and cinema experts come together from different parts of the world to form the international jury who take responsibility of judging films. May I please request them to come on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome the members of our international jury, Israeli writer and film director Nadav Lapid, French film editor Pascal Chavins, Spanish documentary filmmaker, journalist and film critic Javier Angelo Borteren, American film producer Jinko Gotho, and India's very own film writer and director Sudipto Sen. A huge round of applause for our international jury. We express our heartfelt gratitude towards all of you. Thank you so much. Thank you so much, and thank you Shri Anurag Singh Thakur and Dr. Pramod Sawant for doing the honors. Thank you so much.
Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, the aim of the Indian Panorama, organized by National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is to select feature and non-feature films of cinematic and thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films will be showcased. I would like to first introduce the feature film jury of the year. The feature film jury is headed by the acclaimed director and editor, chairperson, Sri Vinod Ganatra, along with 12 distinguished film personalities. And they are Ashok Kashyap, Ananda Jyoti, A. Karthik Raja, Dr. Radha Singh, Anumala Prem Raj, Emo Singh, Jugal Debata, M. Geeta Gurappa, Shailesh Dave, Shibu G. Susalan, V. N. Aditya, and Vishnu Sharma. Please give a huge round of applause for the feature film jury of Indian Panorama. And now let me introduce the non-feature film jury of this year. The non-feature film jury is headed by the acclaimed producer, writer, and National Film Award winner, chairperson Sri Oyanam Doren, along with 6 other distinguished film personalities. And they are A. Chandrasekhar, Harish Bhimani, Manish Seni, P. Umesh Nayak, Rakesh Mittal, Sanskar Desai. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the non-feature film jury of Indian Panorama. और अब बारी है एक बहुत ही अहम शख्सियत को स्टेज पर इनवाइट करने की. गोवा की शान, इफी की शान, the man of the hour, who never ceases to amaze us with his dedication and visionary approach. Please welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Good evening, everyone. Very warm welcome to each one of you who are here to witness the 53rd International Film Festival of India in our beautiful state of Goa. At the onset, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for State for Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Union Minister for State for Tourism and Ports, Sri Sripad Naikji, Secretary for Information and Broadcasting, Sri Apurva Chandraji, special guest for the inaugural today, Sri Ajay Devganji, Sri Sunil Shetty ji, Sri Manoj Bajpayee ji, Sri Prabhu Deva, Sri V. Vijayendra ji Prasad, Sri Pankaj Tripathi, Miss Shreya Saran, members of the jury, my cabinet colleague, member of parliament, Sri Vinay Tendulkar ji, member of legislative assembly, chief secretary Sri Puneet Goyal ji, member of NFDC, member of steering committee, CEO and governing body members of ESG, all the respected dignitaries from the film industry across the world who have gathered here, the member of the print and electronic media, and my brothers and sisters. We are at that time of the year when the filmmakers and enthusiasts from all over the globe are extended a warm welcome in our beautiful crown jewel of the Indian subcontinent that we all call Goa. Most of you have been constantly visiting Goa. For those who are here for the first time, let me reiterate that you are in that part of the world where you can experience pristine seashore, peaceful hinterland, divine pilgrim sites,
mesmerizing backwaters, mouth-watering cuisine, and most importantly, very warm and hospitable people. At this moment, as the curtains will be raised on 53rd IFI, let us fondly remember our former Chief Minister, late Sri Manohar Bhai Parrikar, who translated his vision into reality and allowed Goa to be the permanent host for this extravaganza. The Government of Goa and the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, are jointly executing this festival through Entertainment Society of Goa and National Film Development Corporations between November 20th to 28th. This year, the state government has taken the initiative to curate the special masterclasses for Goan film fraternity. Renowned personalities from Hindi and Marathi film industry will be addressing masterclasses. A special Goan section has also been curated this year. A jury panel comprising of 3 members from Indian Panorama and who formed the jury for Goan section has selected 6 short film and 1 documentary film. We have been able to draw the attention of substantial number of tourists as well as the local public towards this program. Therefore, to enhance the participation of Goan and tourists, we have also curated the various peripheral activities such as the Festival Mile, Heritage and Entertainment Zone, etc. Festival Mile will have the parade of glimpses of Shimgotsav and Carnival on 26th and 27th November. Caravans will be deployed throughout the Goa and popular movies will be screened for the masses. Open air screening to be carried out at Miramar Beach and also at the Joggers Park Altino and Ravindra Bhavan Margao. With the intention to make this event more inclusive, a special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment. We have tried to strike a balance for the film and entertainment industry with the general public for curating this festival. The opening and closing ceremony will see as many as 14 cultural performances featuring the top film celebrities from across India and will also include the music and dance group representing the France, Spain and Goa as well. As you all may be aware, India is celebrating 75 years of its independence. Therefore, in this Amrut Kal, the theme of the opening ceremony will be evolution of the Indian cinema in the last 100 years under the Azadi Ka Amrut Mahotsav celebration. As the Chief Minister of Goa, I take this opportunity to extend heartfelt gratitude to the Government of India under the able leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for the relentless support and guidance that his entire cabinet is extending the efforts of the Goa government in making the Goa one of the best performing state in terms of the relevant parameters and indicators of infrastructure development as well as the human development. Specifically, I would like to mention the support extended by Sri Anurag Singh Thakur ji and Dr. L. Murugan ji, the time and again in the successful organizing of this grand event. Dear friends, our Entertainment Society of Goa, in this nodal arm of our government, which provides the assistance to the stakeholders in the film industry in terms of conducting the shooting in the state of Goa. I am aware that the Goa, with its tremendous natural treasure, is the most ideal place for the film shooting behind Mumbai. I am also aware of the issue that our line producer come across while actually conducting the shooting,
and I assure you of all the possible support from the government of Goa in this regards. I am also glad that the film culture is strengthening its roots in our state, and some of our youngsters have started making their presence felt in the industry, may it be in the film or in an OTT platform. With the best rail, road, water and air connectivity with all parts of the country, and increasing pool of the trained and talented actors, writers, technicians, etc., Goa is your most ideal destination for the film shooting as well as the post-production. My government will promote the creations of an entire ecosystem required for making the films. Our aim is to create the hub with the world-class production, post-production and training facilities for the global media, entertainment and IT industry. Setting up of state-of-the-art film school will provide the opportunities to the Goan youth to acquire the required skills and education to become the eligible for the employment opportunities. I call upon the producer and investors to come forth and invest to scale up the film-related infrastructure in Goa, for which my government is committed to provide the necessary assistance. Very soon, my government will come out with a comprehensive policy and hassle-free action plan for the same. A long-pending dream of creating the permanent venue for the International Film Festival of India is become a reality. Setting up of the world-class convention center with multiplex and other associate infrastructure in an area of 25 acres is at the final stage of awarding the project on the PPP basis. Hopefully, in the year 2025, we will be able to celebrate the IFFI at the new venue. I wish all the delegates a very pleasant stay and also the very enriching experience through the various symposium, panel discussion, etc. at a part of the 53rd IFFI in Goa. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आयच्या IFFI इनॉग्रलाक तुमकां खूब खूब स्वागत करता आनी आमच्या मदीं आयिल्ले सगळे आमचे गेस्ट माननीय अनुराग सिंग ठाकूर जी, अजय देवगण जी, सुनील शेट्टी जी हांचे नेटान ताळयो मारून तुमी गोंयच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी स्वागत करचें आनी परत एकदा IFFIचो आस्वाद घेवपा खातीर फुडले 9 दीस आमकां इंटरॅक्शन करपाक मेळटलें. वेरियस फिल्म इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडेन, डायरेक्टरांसां कडेन ही गोंयकारां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर फिल्म इंडस्ट्रींतली बऱ्यांतली बरी संदी आसा. तिचो फायदो आमी सोडचे ना. जय हिंद, जय गोवा. Thank you so much, sir, for inspiring words. But sir, please stay back, sir. If you can please stay back on the stage. Thank you so much. And I would also like to call upon the stage Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Minister of State, Ministry of INB, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, and Honorable Governor, Goa, Shri P.S. Sridharan, to felicitate our honorary dignitaries today. Can we please have you on the stage, sir? कुछ लोग हैं जो सिनेमा में आते ही, कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा में आते हैं और कुछ लोग जो सिनेमा कहलाते हैं. इनकी प्रेजेंस और एफर्ट्स के बिना शायद इंडियन सिनेमा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो जहां अभी तक पहुंचा है. These personalities are very special to the country and they have definitely some greatness in them. अब जिन्हें बुला रहा हूं वो अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है. He has been a flag bearer of good cinema in our country. लोग कहते हैं कि यार मनोज बाजपेयी इस फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी. प्लीज वेलकम 3 times नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री मनोज बाजपेयी जी.
मनोज सर आपसे एक सवाल है, प्लीज एक सवाल है सर, आपको बिना बात के नहीं जाने दूंगा सर मैं। मेरी पहली फिल्म वैसे लोगों को लगता है दंगल थी, लेकिन 7 उचक्के मेरी पहली फिल्म थी और मैं तब से सर को चरण स्पर्श करता हूं हर बार। सर ये जानना चाहता हूं, यू नो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन सिनेमा, जो तब का से पहले का सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है बहुत बदल चुका है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू सी दिस चेंज सर, क्या बदल चुका है जब से आपने स्टार्ट किया था और आज यू नो जब हम देखते हैं आपको? Yeah, I'm not that old. Question. सर सिनेमा जो है बहुत बदल चुका है, जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, तो आपके हिसाब से क्या बदला है सिनेमा में? आपने क्या देखा है अपनी जर्नी से? नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और तकनीक बदला है, सिनेमा कहानी कहने का ढंग बदला है। अभी हम लोग फ्लाइट में थे, मैं और परेश भाई और सुनील शेट्टी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज सिनेमा जितना डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, जितना अलग अलग जगहों पर जा चुका है, हर कोई जो कहानी कहना चाहता है आज कहानी कह सकता है और हर कोई प्रतिभा कहीं से भी आ सकता है और वो एक मकाम बना सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह का कंटेंट का भरमार और इस तरह की प्रतिभा की भरमार शायद फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार देखा है। ये अपने आप में बड़ा सुखद है और मुझे खुशी होती है कि इस देश के किसी भी कोने से एक बड़ी प्रतिभा आती है और अचानक रातों रात छा जाती है, एक सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। थैंक यू सो मच मनोज सर, कंग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, प्लीज स्टे देयर सर। यस। एंड नेक्स्ट जिन्हें हम ऑनर करने वाले हैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा अभी। वी ऑल लविंगली कॉल हिम अन्ना, which means elder brother in Telugu and Tamil of course. Over 100 films, over 30 years of great performances where he has inspired the young generation about fitness and mental health. Please give it up for our beloved Anna, Sunil Shetty. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुनील सर, आपसे भी मेरा एक सवाल है, ये डी एजिंग का क्या फॉर्मूला है सर? आप जितने भी लोग इस समय हैं ऑडियंस में, मुझे बताएं अगर इनकी अगर लगता है कि ये बूढ़े हो रहे हैं, आप छोटे ही होते जा रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, आई थिंक खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है। वाह। यू नो, मैं चाहता हूं कि सब अच्छा बने, सब अच्छा करे एंड यू नो एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करें। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ट्रेनिंग, जैसे अजय हमेशा कहता है कि सिर्फ 2 जन हैं जो इंडस्ट्री में जल्दी उठते हैं, एक दूध वाला है और दूसरा सुनील शेट्टी। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट अप we would like to honor the man जिनकी वजह से हीरो की एंट्री सिनेमा में और भी इंटरेस्टिंग बन गई। आता माझी सटकले, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑलरेडी तालियां बज चुकी हैं, क्या ही देता हूं, जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिसमें है दम, वो है फक्त हमारा बिलव्ड अजय देवगन। गिव इट अप फॉर पद्मश्री अजय देवगन। अजय सर, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। आप पहले माइक ले लीजिए प्लीज।
First of all, congratulations on huge numbers of Drishyam 2. बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको. Thank you so much. And सर बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं. अगर आप तीनों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपको क्या है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन या एक्टिंग? आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल सवाल है. जब एक आर्ट लवर होता है वो किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता. फिल्म्स इन टोटलिटी आई वुड से, हर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट उतना ही ज़रूरी होता है फिल्म मेकिंग में, और किसी एक डिपार्टमेंट के बिना फिल्म अच्छी बन नहीं सकती. सो बेसिकली आई लव मेकिंग फिल्म्स, एंड दैट कुड बी एक्टिंग, दैट कुड बी डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एवरीथिंग. So there's so many people in this audience जो filmmakers बनना चाहेंगे, actors बनना चाहेंगे. A quick, word of advice for them. I don't think anybody can give any advice to anybody. Follow yourself, and I think believe in yourself. That's the most important thing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give it up Thank for Ajay Devgan, sir. Thank you so much, sir. अक्सर जॉनर एक एक्टर की एक्टिंग को ना डिफाइन करता है, बट जिनको मैं अगले अब मंच में बुलाने वाला हूं वो एक्टर ऐसे हैं कि खुद ही जॉनर बन जाते हैं. द मैन हु हैज इमॉर्टलाइज्ड 1 million कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, कॉमेडी हो या नेगेटिव रोल या फिर लवेबल बाबू भैया, तेजा बन के इन्होंने इंडस्ट्री पे एक मार्क छोड़ा है. My beloved actor, producer and India's most legendary Padma Shri, Paresh Rawal sir. सर देखिए, आजकल ऐसा जमाना है कि सब लोग कॉमेडी भी करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं, सब करते हैं. ये आज का जमाना है, लेकिन आपने उस जमाने में ये सब कुछ कर दिया था सर. आई रियली वांट टू नो कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट आपने दिया है सिनेमा को, आपकी अब तक की जर्नी का क्रक्स क्या है? देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बडिंग एक्टर्स, जो यहां पर इस समय होंगे, आपसे जानना चाहेंगे सर. मुझे फॉर्चुनेटली अच्छे राइटर मिले, अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छे को आर्टिस्ट मिले तो मैं कर सका, वरना कुछ रोल तो हमारे नसीब में ऐसे आते थे, अब क्या बताएं. सिर्फ पैसे नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते. ये था. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. Give it up for Paresh Rawal sir. Thank you so much sir. And I would like to call upon the stage Sri Shripad Nayak, Ministry of Culture and Tourism, Goa, for the next felicitation. So please, can we have you on the stage, please? और कुछ लोग अपनी कलम से शब्द लिखते हैं और कुछ आइकॉनिक राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलम से इतिहास लिखा जाता है. द मैन हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, whose instrumental writing gave us hits from 1988, including the ones that became cult movies, namely Magadhira, Bahubali and RRR. Give it up for the wizard of words, Vijendra Prasad sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं.
विजेंद्र सर के लिए। सर आपसे भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर तन्वी सर, मैं भी जो कुछ बोल रहा हूं ये किसी ने लिखा है सर, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं जो कुछ बोल रहा हूं यहां पर वो किसी ने लिखा है, वो एक राइटर ने लिखा है। हम सबका अस्तित्व ऐसे जिंदा रहता है कि आप जैसे राइटर इस देश में हैं। तो सर आई एम अ लिटिल हार्ड इन हियरिंग। Sir, whatever I'm speaking right now has been written by a writer. Yeah. So we all exist because a writer writes something as spectacular as you do. Abhi Paresh Rawal sir was talking about this, that I got a chance to work with brilliant writers. So sir, all the upcoming writers, the budding writers who are there in the audience, what do you want to give them, a quick advice, sir? Be inspired by Gandhiji. Can you understand? No, I mean, this Gandhiji. Be inspired. What an inspiration, sir. हम सबकी यही इंस्पिरेशन है. Thank you so much, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. And thank you so much, everyone, all the dignitaries, for doing the honors. Thank you so much. Oh. Thank you so much, sir. So guys, time for a fun fact. जैसे हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से विष्णु भगवान के सबसे फेवरेट, उनका जो सबसे फेवरेट महीना था वो कार्तिक था, वैसे ही आजकल बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट के हिसाब से हर प्रोड्यूसर का सबसे फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स कार्तिक है. आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. तो मैं भी इंडिया के फेवरेट एक्टर से बात करना चाहता हूं. तालियों के साथ स्वागत करो प्लीज. गोवा, यू रेडी फॉर कार्तिक आर्यन ऑन द स्टेज? So कार्तिक, बड़ी स्क्रीन पर, बड़े बड़े स्टेज पर बहुत बड़ी बातें हुई हैं, बट इफी आई थिंक इज डेफिनेटली समथिंग वेरी डिफरेंट. एक बार लोग देखो कितने हैं, ऊपर से हम गोवा में हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इफी? बहुत सारे लोग हैं यार. पूरा भरा हुआ है. बट मैं यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ और इफी में आके उसका हिस्सा बन के ऑल द मोर एक्साइटमेंट बढ़ गया है. यहाँ पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ आज. एंड मतलब मैंने इतनी ऑडियंस अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी एक साथ. सो आई एम सो हैप्पी कि इफ़ी के लिए सब लोग आप यहाँ पर आए. और मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है गोवा. तो यहाँ आके मैं ऑल द मोर खुश हूँ. क्या बात है. सो यार, इट्स बीन अ डेकेड फॉर यू इन द इंडस्ट्री. और ये जो जर्नी रही है डेफिनेटली बहुत ही फ्रूटफुल रही है. आई हैव डन 2 फिल्म्स विद यू, सो आई नो किस तरीके की पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट है तुम्हारी. सो आई रियली वांट टू नो कि ये जो इतने सालों की मेहनत है उसको आप कैसे समराइज करते हो? आई मीन स्ट्रगल चलता रहेगा, यही समरी है पूरे. बट दिस ईयर मुझे लगता नहीं है कि भूल भुलैया 2 के अलावा आई मीन दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर. तो आई मीन जो स्ट्रगल आपने बोला है वो हम्बल तरीके से बोला है, बहुत अच्छी बात है. बट आई रियली वांट टू नो दैट द प्रोसेस एंड किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को? मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ. आई मीन मैं हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ और एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ. जो अच्छी फिल्में मिल रही हैं उनको पकड़ रहा हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स से बातें कर रहा हूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ और अपने ऊपर मेहनत करता जा रहा हूँ. तो विद ईच एंड एवरी फिल्म आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई वांट टू बी रियली हैप्पी. आई थिंक एक बैलेंस है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहता हूँ, तो वो भी एक ढूंढ रहा हूँ. And कार्तिक, जितने लोग इस समय ऑडियंस में हैं, and of course including both of us who are also actors, I mean सब यहाँ सिनेमा के लिए हैं. So what does cinema mean to you? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. क्या बात है. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तो देखो ऐसा है, एंटरटेनमेंट करना कार्तिक आर्यन को भली भांति आता है. ऑन दैट नोट आई एम लीविंग द स्टेज फॉर यू. कुछ चंद मिनट स्टेज पर मैं कह रहा हूँ कार्तिक आर्यन आपके हवाले करके जा रहा हूँ. आर यू गाइस रेडी? ओके ब्रदर, सी यू इन अ बिट. मुझे भी एक्चुअली बहुत लोगों से बात करनी है यहाँ पे स्टेज पर. गिव इट अप फॉर अपार शक्ति. एक बार जोरदार. रुका वो सुनने के लिए तालियां.
अजय सर, दृश्यम 2 के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। सुनील सर, परेश जी, मनोज सर, सब लोग। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इफी में आके हम सब यहाँ पे एक खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं बस वेलकम करना चाहूंगा कुछ लोगों को स्टेज पर। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर्स ऑफ आवर टाइम्स, द फियरी, द गो गेटर, गिव इट अप फॉर आवर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन स्टेज। मैं सबसे पहले, हाँ माइक ले लीजिए सर। सर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे, और मतलब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है। तो मैं बस पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मामले में ये इंडिया के लिए फिनोमिनल साल रहा है। आप इन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो सब खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, क्योंकि कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था। सरकार के लिए भी किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग सेशन में डालना देश और विदेश में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और मीराबाई चानू के साथ तो ऐसा हुआ कि उसकी इंजरी हो गई और यूएस वीज़ा 24 घंटे से कम समय में लगाकर टिकट बुक करके अमेरिका भेजना अपने आप में चुनौती थी। लेकिन 6 महीने बाद जब वो सीधी टोक्यो गई तो भारत के लिए मेडल भी जीत कर लाई। चुनौतियां थी लेकिन अवसर भी देखने को मिले। थॉमस कप में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में 66 मेडल जीते। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और बात करते करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की बात तो आती आती है, उन्होंने मुझे पूछा वर्ल्ड कप का मैच देखा आपने, जो विराट ने क्या बैटिंग की, कैसे इंडिया जीता? मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। उन्होंने कहा मैंने तो कहते RRR भी देखी है, क्या फिल्म बनी है। और ये कौन कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि RRR मूवी देखने के लिए। सो अब कुछ रीजनल नहीं है, देयर इज नथिंग रीजनल। इफ योर कंटेंट इज गुड, दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड ग्लोबली। सो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल इट गोज। सो आई थिंक इन बोथ एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, sports and cinema, India has done a fantastic job, and I think the Prime Minister Modi has always been there for our sports lovers, motivating them before any tournament. Olympics में जाने से पहले भी और आने के बाद भी शायद किसी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अनुराग सर, आप तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं, करेक्ट? तो इंडिया में तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है। तो आप ये बताइए, जब मैच पे लास्ट बॉल पे टीम हारता है तो आप भी आम लोगों की तरह बोलते हैं कि अरे यार स्क्वायर कट मार लिया होता, स्ट्रेट क्यों मारना है? ऐसा होता है क्या आपके साथ? देखिए, भारत की एक बड़ी खासियत है, क्रिकेट पॉपुलर भी इसलिए है कि पान वाले से लेकर चाय वाले तक वो ये बता देगा तेंदुलकर को या विराट कोहली को कौन सा शॉट कब खेलना चाहिए था। और मुझ जैसे लोग जो जीवन में कुछ खेले, मेरे जैसे लोग कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि पता है बाहर से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो बीच ग्राउंड में खड़े होकर जब 60,000 लोग बोल रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है, ये उतना आसान नहीं है। अगर आप इस भीड़ में से 2 लोगों को मंच पे बुलाओगे और ये मेरा माइक उनके हाथ में देखोगे तो समझ आएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सुपर्ब सर। सर इमोशन की बात की अभी आपने, और सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस। इसलिए मैं आपको कुछ इमोशंस दूंगा और आपको बताना होगा कि आपके इस इमोशन के बारे में सुनकर आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है। रेडी हैं आप सर? मैं कोई बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं।
सर प्यार। अगर मेरे समय की बात करें, सर कोई भी समय का बता सकते। प्यार हर समय में एक जैसा ही होता है। सर मैं गलत मैं इंसान हूं। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा फिल्म का मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब आप सीधा इमोशन पे आ गए। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया आपके सवाल पूछ के, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन मेरे समय में क़यामत से क़यामत तक मैंने प्यार किया, दो ऐसी मूवीज़ थी जो उस समय की सुपरहिट मूवीज़ थी। सर दूसरा इमोशन देता हूं, गुस्सा। सनी देओल याद आते हैं। सनी देओल, बस कोई मूवी नहीं, सीधा सनी देओल। डायलॉग मुझे बोलने नहीं आते कि 2.5 किलो का 2.5 हाथ और वो सब करना, लेकिन सनी देओल याद आते हैं। ठीक है सर। कॉमेडी, परेश भाई केम छो? मजा में मजा में। सर ट्रेजेडी। अब क्यों सबकी बात मेरे साथ कर रहे हो? ट्रेजेडी को लेके देखिए, एक और आपको उरी में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई थी, लेकिन एक संदेश ये भी गया कि भारत बदल चुका है। अब केवल देखते नहीं, 26/11 की तरह घर में घुसकर मारने का काम भी करते हैं। क्या बात है सर। सर हॉरर। हॉरर, कईयों को अपनी बीवी याद आई होगी, कईयों को कोई और जमाना याद आया होगा, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, वो समय किसी को जो हॉरर वाला, जैसे डरावना, कोविड का समय बहुत डर वाला था, क्योंकि कोविड के समय में महामारी ऐसी थी कि दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली निकले कि मोदी जी थे, तो कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, तो एक नहीं दो वैक्सीन भी बन गई और सबको मुफ्त में लग भी गई। और आज मैं तो पिछले साल भी प्रमोद जी यहां पर था, ये आधा पिछली बार भरा हुआ नहीं था, अब पूरा भरा हुआ और लोग खड़े भी हैं। तो गोवा वालों को बहुत बहुत बधाई शानदार कार्यक्रम के लिए। वो समय डरावना था, हॉरर वाला था, जब पैंडेमिक का डर सताता था, लेकिन नेतृत्व अच्छा था, तो आज खुशियों भरा समय भी आ गया है। यही अंतर है। क्या बात है सर। सर मैंने सुना था कि आप एकदम क्विकली जवाब देते हैं, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। वैसे मैं एक बात और करना चाहूंगा, मेरे सामने अजय सर बैठे हैं, उन्होंने सिखाया है दुआ में याद रखना। अजय सर, मैं आपको दुआ में भी याद रखता हूं और गोवा में भी, तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर। जोरदार तालियां हो जाए अजय देवगन सर के लिए। अजय सर, 2 अक्टूबर को विजय सालिसकर विजय जी, सर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को विजय और रूबाबा पणजी गए थे सत्संग में, वहां पाव भाजी खाई थी। फिर 3 अक्टूबर को वापस विजय और रूबाबा इफी आए थे, ये याद रखना। सर आप गुस्से वाली कोई मूवी बताने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय सर, आप देवगन नहीं टॉप गन हो सर। एक ही बात बोलना चाहता हूं, आमी जे तुम्हार छिन 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 छू शुदू जे तुम्हार, लव यू सर। लव यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अब देखिए, मुझे फिल्मों से इश्क मोहब्बत और प्यार तब हुआ जब आप फूल और कांटे में 2 बाइक्स पर एंट्री मार के आए थे। इसलिए इफी के स्टेज पे मैं आपके साथ शपथ लेना चाहता हूं। सर आप रेडी है शपथ के लिए? डिपेंड करता है शपथ का है। नॉर्मल है सर। वो सामने लेके गए। पिछली बार बहुत साल पहले एक शपथ ली थी। वो वाली शपथ नहीं है सर। सर सिंगम स्टाइल में हाथ आगे कीजिए सर। ये शपथ की गारंटी नहीं है, हाथ ही आगे किया है।
सर मतलब ठीक है, इतनी गारंटी नहीं लेनी, बट हम शपथ प्लेज ऐसी चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल सी है, ज्यादा इसमें कुछ ठीक है, चलो ट्रांजैक्शन आरटीजीएस नहीं होगा हमारा। हम कसम खाते हैं कि मरते दम तक फिल्मों के लिए जिएंगे। रिपीट करना है सर? मुझे रिपीट करना है? मुझे बोला गया आपसे रिपीट कराने की। इसमें कसम खाने की कोई बात नहीं है, नजर आता है। हाँ। आई थिंक हम फिल्मों के लिए ही जीते हैं और हम काम के लिए ही जीते हैं, अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए जीते हैं और बाकी जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस काम करते रहो। सुपर्ब है सर। सर एक और है, हम रोज सेट पर भी जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं सर। हर फ्राइडे नई कहानियां लेकर आएंगे, हम गोलमाल करके दुनिया को हंसाएंगे, भूल भुलैया करके थोड़ा डराएंगे। हम कसम खाते हैं टिकट के, पॉपकॉर्न के और समोसे के पूरे पैसे वसूल कराएंगे। हर फिल्म के साथ ऑडियंस को नया हेयर स्टाइल, नया डांस स्टेप भी सिखाएंगे और पंजी पे 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाने जरूर आएंगे सर। हम शपथ खाते हैं, बस हो गया। जी सर। मैं फिल्मों में भी अपने डायलॉग कम कर देता हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, यू बीन एंटरटेनिंग अस अ लॉट एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की जरूरत थी, जो अगेन दृश्यम 2 सर की फिल्म ने अभी अभी करा है। सो प्लीज प्लीज बहुत सारी तालियों के साथ इनके लिए। अभिषेक भी हैं, कुमार जी भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दृश्यम के बारे में? नहीं, आई थिंक फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो अब फिल्म जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हम बोलने लायक नहीं रहते, ऑडियंस बोलने लायक होती है। या तो जूते ऑडियंस से जवाब दे दिया है लेकिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपार शक्ति हाँ हो जाए अजय सर के लिए एंड कार्तिक माय ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियां हो जाए कार्तिक आर्यन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। All right. The IFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And this year it is being awarded to a very, very special personality. Reality and fantasy, dreams and memories flow freely into one another in the haunting layered works of this genius. He is arguably the most important Spanish filmmaker to emerge ever. And today, he receives the IFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Let's have a thunderous applause for Sir Carlos Suara. Let's play the AV. Ana, Antonio, por favor, Fernando, colócalos todos ahí. No, no, estás muy guapa. Anda, Ani. ¿Qué pasa? Natalia, una sorpresa. Silencio. ¿Qué será? Luz. Música. ¿Bailas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque Voy a poner la canción. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. No la quites, hombre, está bien.
request Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister, Goa, Dr. Pramod Sawant, to do the honors. And please come on the stage, sir, with our IFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, I would now like to request Carlos sir's daughter, Anna Swara Rahman, to please come on the stage and accept the award on his behalf. Congratulations to you and your father, and of course we have an acceptance speech via AV from sir. If we can have a look. Dentro de unos días estaré ya en perfectas condiciones para viajar, pero hoy no. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos, y un abrazo muy fuerte al festival. Thank you so much, ma'am. Anurag sir, please stay on the stage, sir. Thank you so much, Pramod sir. Thank you so much. Congratulations one more time. And IFI has become a platform which covers and appreciates a wide spectrum of national and international cinema, just like Jio's widest and best mix of 5G spectrum. And it gives me immense pleasure to announce the next honor, जो एक हस्ती को सम्मानित करने के लिए है, जिन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नया आकार दिया है. This is the award for the Indian Film Personality of the Year. And can we please have the envelope? Anurag sir is going to announce. Very wild guess. And the award goes to Mr. Chiranjeevi. Whoa! Give it up for Chiranjeevi, sir. Let's, what an amazing journey. And let's play the AV and listen to what he has to say. He's always an inspiration and a guiding force. He's an all-rounder in the main street cinema. ఒక్కొక్కటి సాధిస్తూ హిమాలయాల్ని తలదన్నే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే ఆయన శక్తి. తెలుగు సినిమా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ నేమ్ పద్మభూషణ్ మెగాస్టార్ డాక్టర్ చిరంజీవి. పొగరు నా ఒంట్లో ఉంటది, హీరోయిజం నా ఇంట్లో ఉంటది. సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత అక్కడ ఆ ఇంద్రుడిది, ఇక్కడ ఈ ఇంద్రసేనుడు. Wow! Lajawab, bemisal, adbhut, magical, mesmerizing. All these words got a new meaning after he started adorning the screen, isn't it? With an illustrious career spanning almost 4 decades, he has been a part of more than 150 feature films. He has been honored with most coveted Padma Bhushan and the Raghupati Venkaya Award, the highest award of Andhra Pradesh, the Nandi Award, amongst many, many others. He captured the imagination of the masses with his performance in Entilo Ramaya Vidilo Krishnaya in 1982.
He is admired for his zestful dance performances and fight sequences brimming with power. His influence has claimed him the title of a mega star. He is none other than and one and only Chiranjeevi. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Huge round of applause for Chiranjeevi sir. He's truly India's biggest treasure. Thank you, Shrinag sir, for doing the honors. And Murugan sir, thank you so much. Anurag sir, can we please have you on the stage to address the entire audience? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री राग ठाकुर जी के लिए. Yes, it's a good evening, sir. How are you, sir? Honorable Governor of Goa, Honorable Chief Minister, Honorable Union Ministers, Secretary INB, members of the Steering Committee, friends from the world cinema and media, people at a given time in history. It's my privilege and honor to officially welcome you. The theme of IFFI to the 53rd International Film Festival, Kutumbakam, a phrase which embodies the essence, peaceful coexistence where the world is one family. In fact, India's rising global role and the presidency of the G20. जी हाँ, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसी और को नहीं, भारत को ये सम्मान मिला है. Revolves around this theme of the one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The 53rd IFFI is all set to be a melting pot of myriad vibrant cultures and spectacle of cinematic excellence. A whopping 282 films from 72 countries will be screened this year at the 53rd IFFI. 25 features as well as 20 non-feature films will be showcased at the Indian Panorama section from a broad spectrum of entries. This edition of IFFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema, along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, sections of retrospectives, homages, tributes, and children's films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, IFFI will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. In fact, the first episode of the 4th season of one of the most awaited drama series will also be premiering here at the 53rd IFFI. I will leave you guessing by only sharing that they are one of the Israel's biggest stars. और ये इज़राइल के बड़े सितारे जो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर सीरीज इनकी आई है, उसका अगले सीजन का प्रीमियर भी कहीं और नहीं, उनकी स्टार कास्ट के साथ गोवा में ही होने वाला है. It has been our vision that we embrace new age platforms such as OTTs and make them an inclusive part of the festival. Earlier this year, we celebrated the 75 long years of diplomatic relations with France, marked by a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron. And in another first, this was followed by India being the country of honor at the Marshidu Films at the 75th Cannes Film Festival. जी हाँ, 75वां वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल का भी था, 75वां वर्ष भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों का भी था, 75वां वर्ष भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी था, और दुनिया को पहला सम्मान किसी देश को मिला तो हमारे भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला. And continuing in this spirit, I am delighted to welcome France as the country of focus at the 53rd edition of IFFI. The French Republic is known for its rich and innovative film tradition and history. I extend my greetings to the French ambassador, Mr. Emmanuel,
and filmmakers as part of the delegations to India. Further, for the first time, IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing country pavilions. I request all of you to please visit the new Film Bazaar. You can look at various film festivals across the world. Our Film Bazaar is as good as or maybe better than those marketplaces in any of the film festivals across the globe. In fact, they will also include state governments, industry players, ministers, apart from nations of the world. I invite you to explore over 40 pavilions, and that will be showcased at the 15th edition of Film Bazaar. Further, I'm delighted to share with you all that this year again, we have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, in its second edition, out of nearly 1,000 entries across 10 categories, such as direction, editing, playback singing, script writing, animation, acting, amongst others, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners, and the selected 75 young filmmakers or the selected 75 filmmakers are seated among us today. Please put your hand together to welcome them. I welcome you all to IFFI to explore, experience and engage with the brightest minds in the industry. They represent 19 states. So these 75 representatives come from 19 states, coming from places like Jaintia Hills from Meghalaya, Lakhimpur from Assam, Khoda from Odisha, and so on. And the youngest among them is 18 years old. Yes, 18 years old. And my best wishes for your 53-hour challenge, and may the best film win. Moving on, I take great pride in highlighting that in this edition of IFFI, we will commemorate 50 years of Manipuri cinema by showcasing a specially curated package of notable feature and non-feature Manipuri films. The first Manipuri film was Matamgi Manipuri, and the film won the President Medal, Rashtriya Chalchitra Puruskar, at the 20th National Film Awards held in 1973. In another first, to make the festival more inclusive and accessible for everyone, we have made special provisions for specially abled. जी हाँ, दिव्यांगजन के लिए special प्रावधान भी किए गए हैं, keeping in mind their accessibility needs. The films in this section will be audio-visual equipped embedded with audio descriptions and subtitles. In line with our government's inclusive vision under the Honorable Prime Minister, I am also happy to share that the Film and Television Institute of India, popularly known as FTII, will be taking 2 special courses for specially abled. One basic course on smartphone filmmaking, curated by artistic individuals, and a basic course in screening acting, curated by wheelchair users. Moving on, I would like to take this opportunity to congratulate the winner of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2022, Mr. Carlos Sora from Spain, and I'm thankful that his daughter is here among us today. He's a great filmmaker, 93-year-old, but still, despite everything, his family has come all the way. We welcome them in Goa and thank you for making it. He's a master who has devoted his life to the art of filmmaking and distinguished himself as one of the greatest in the field of filmmaking, photography and writing. I would also like to acknowledge Spanish delegation present here today and led by Mr. Carlos, President of the Spanish Film Commission, His Excellency, Ambassador of Spain, and for those cinema lovers who can't make it, I am delighted to share
that you must log on to our new website and explore virtual IFI to attend master classes by industry experts, view in conversation sessions with industry leaders, watch film, etc. till 13th of December. And before I end, I would like to thank Mr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, for making arrangements here. His team has been doing a fantastic job. मैं सरकार को तो धन्यवाद देता हूं, अगर जनता ना आए तो कोई भी कार्यक्रम हो वो सफल नहीं हो सकता। आप सबने आकर इस IFI के 53rd एडिशन को सफल बनाया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि अगले वर्ष का जो 54th IFI होगा उसमें क्या नयापन हो, क्या और जोड़ना चाहिए, क्या कुछ आप और देखना चाहते हो जो दुनिया भर के लोग यहां पर आएं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने सुझाव गोवा की सरकार को भेज सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रमोद जी जब गोवन कुजीन की बात कर रहे थे, गोवा कल्चर की बात कर रहे थे, गोवा सिनेमा की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनकी एक ही आवाज आ रही थी कि आइए और बार बार आइए, गोवा घूमने भी आइए, सिनेमा के लिए भी आइए, यहाँ की कला संस्कृति को देखने के भी लिए आइए। आपका नाम ही ऐसा है, गो मिस जाओ, आ मिस आजा, गो आ, तो आप जाने के साथ साथ आने का बुलावा भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है कि इसको कोई और रिप्लेस अब कर नहीं सकता। दुनिया की फिल्में गोवा ने एक अपनी पहचान ही है। अगले साल हम इससे बड़ा और इवेंट लेकर गोवा में आएंगे और आशा करता हूं अगले साल आप आकर फिर IFI की शान बढ़ाएंगे। देश और दुनिया के कोने से आए हुए सभी अपने फिल्म कलाकारों का, फिल्म निर्माता, निर्देशक का मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे लिए अवसर है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते हम लोग अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा में अगले 25 वर्षों में भारत को दुनिया का फिल्म शूटिंग के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ कंटेंट हब बनाने का काम करें। ये यात्रा जो हमारी अमृत काल तक की होगी, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं कि सिनेमा जगत में भी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इस बात का संकल्प हम इस धरती से लेकर जाएंगे। ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता, ना केवल दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने वाला देश, बल्कि दुनिया का एक केंद्र बिंदु फिल्मों को लेकर बने। चाहे वो मार्केट की बात हो, फिल्में बनाने की बात हो, ये सब संभावनाएं हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, शूटिंग की साइट्स की कोई कमी नहीं है। तो अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास जगा है मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार फिर सभी कलाकारों का, सभी फिल्म जगत की हस्तियों के साथ साथ गवर्नर साहब, CM साहब, यूनियन मिनिस्टर्स, फिल्म कलाकारों के साथ सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. One more time, give it up for Shri Anurag Singh Thakur for bringing the festival to life. So on the occasion of 75 years of independence, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Azadi Ka Amrit Mahotsav last year. Since then, the central government along with state governments and several governmental and non-governmental institutions have undertaken thousands of activities. In April 2022, the Honorable Minister of INB, Youth and Sports, Shri Anurag Singh Thakur launched a series of 7 short videos to celebrate the inspirational stories and achievements of the women of today under Azadi Ki Amrit Kahaniyan, an initiative by the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Netflix. The second part of Azadi Ki Amrit Kahaniyan is being launched today on this platform of IFI with short videos of 2 of the bravest leaders of the 1857 freedom struggle, Rani Lakshmi Bai and Veer Kunwar Singh. Now I request Honorable Governor Goa, Honorable Chief Minister, Honorable INB Minister to formally launch it
सर आईपैड आपके हाथ में है, प्लीज बटन दबाइए, प्लीज डू द ऑनर्स। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूर्त, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। वाह क्या बात है, आजादी की अमृत कहानियां। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से पैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा, रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे, की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार, गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा मां को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं दी समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आजादी की अमृत कहानियां के लिए। क्या आपको पता है किसकी आवाज थी ये? यस एब्सोल्युटली, द गोल्डन वॉइस पद्मश्री मनोज बाजपेयी जी। सर मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूं। कैसे हो सर? तो मनोज सर, सबसे पहले ये जो आपने नरेट किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वी वुड ऑल लव टू नो। ये सबसे पहले हमारे नेटफ्लिक्स की तरफ से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मुझे ऑफर दिया गया, और
मैंने खुशी खुशी स्वीकार भी किया, क्योंकि बहुत सारे वीरों की गाथाएं हम जानते हैं, क्योंकि हम जिस तरह के क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह के स्कूलों में पढ़े लिखे हैं, जैसे कुंवर सिंह साहब हुए जी, बहुत सारे राज्य के लोग या बच्चे नहीं जानते होंगे, ये आजकल के बच्चे, लेकिन कुंवर सिंह जी की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। और मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है मुझे कि कभी कभी कि हम लोग कभी कुंवर सिंह या ऐसे वीरों के बारे में हम लोग कभी फिल्म बना क्यों नहीं पाए या नाटक हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक ऐसा वीर जिसे गोली लगी अंग्रेज़ों की तो अपना हाथ काट कर भी लड़ते रहे वो। तो इस तरह की गाथाएं, इस तरह की वीरों की, वीरांगनाओं की गाथाएं हैं और इनसे जुड़कर उसको बस अपनी आवाज़ दे करके ही हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। क्या बात है मनोज। तो मुझे लगा कि शायद एक छोटे रूप में ही सही उससे मैं जुड़ जाऊंगा, और बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत मित्रता के तरीके से जो है नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण के बहुत सारे दोस्त मित्र लोग, विक्रम जी वगैरह, सबने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क साधा, पर उसमें मुझे हाँ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्या बात है मनोज सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर के लिए। मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ मनोज सर, एक बार दंगल के बाद मुझसे सवाल पूछा गया कि यार आपको मुश्किल नहीं आई, मतलब इतने वहां पे खतरनाक एक्टर, इतने बड़े सुपरस्टार आमिर खान के सामने इतना मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनको बोला मेरी स्कूलिंग ना मनोज सर के थ्रू हुई है, मैं उससे पहले आपके साथ काम कर चुका था, तो मुझे लगा कि यार अब मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्रिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपके साथ वक्त बिताया है तो मैं जानता हूं कि आपकी हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, माइथोलॉजी को लेकर, हर एक चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज स्टोरीज, आजकल के युवा पीढ़ी को क्या इससे प्रेरणा मिलेगी और क्या, व्हाट इज द टेक अवे फॉर देम? The most important thing that is lacking now in our education system, that we stop talking about the people because of whom we found this freedom, because of whom the culture of this land has been glorified internationally and globally. Somewhere we always think that this is the time which is only true. This is the only time which is most glorified. This nation, this land has seen many glories like this, or more than this, okay? And we can only learn from, we can have much more, we'll feel much more proud if we know the true history or true story of all the brave people, all the glorious people of this land. Absolutely. Yeah. Please give it up for the real heroes. And thank you so much Manoj sir. बहुत अच्छा लगा एक बार फिर। Thank you very much. Thank you so much sir. Thank you. Thank you so much. बहुत अच्छा बोलते हो यार। अरे सर आपसे सीख रहा हूँ सर। Thank you so much. Give it up for Manoj Bajpayee sir. Now ladies and gentlemen, now it is my privilege to request our distinguished guests for the evening, Honorable Governor of the State Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, to address the gathering. So I would request you to please come on the stage. Honorable Union Minister, great dynamic Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of State for Information Dr. L. Murugan ji, Adaraniya Sripad Naik ji, Secretary Information and Broadcasting Abur Chandra ji, Chief Secretary of Goa Goel ji, other officials and veterans in the film field, members of the Entertainment Society of Goa, members of the international jury, eminent personalities from the film industry, our distinguished guests,
and my dear friends, I'm extremely happy to participate in this function because regarding IFI, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji already stated with respect to his objectives, and our Information Minister also gave the details with respect to the objective of IFI. I would like to say that in 1952, second edition of IFI, while it was inaugurating, Dr. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan, at that time declared that this is a golden opportunity for us to interact with the artists and filmmakers in the world. Then he, a philosopher seen by our country, he has stated that quest for knowledge of India and its devotion should be always be promoted through this process. And the Vishwaguru concept stated by our Honorable Information Minister, you see, as far as India is concerned, even after our independence in 1947 onwards, what type of importance we were giving to the artists? The artists are considered even above our protocol and power politics and other things. I am remembering one thing from history. When our Bharata Ratna awardee that M.S. Sugalakshmi is known to all of us. When our first Prime Minister in 1950s, there were a Carnatic music concert was there in Delhi, and they have not seriously invited the Prime Minister at that time. But when the program started, as an uninvited guest, the first person in the protocol, our Prime Minister at that time, was sitting in front of us among the audience. The organizers embarrassed, and everybody was wondered and in an embarrassing situation at that time. Then press people and organizers and others asked the question to the first Prime Minister of India, what do you say about it? Then his answer, I would like to emphasize on that. The first Prime Minister of India, he answered, who am I? A mere Prime Minister in front of this queen of song. That is a tradition of our country, and our Prime Minister is concerned, President Narendra Modi ji is concerned. Sports sphere and art sphere, maximum importance our Honorable Prime Minister is giving. So as far as the purpose proclaimed by Radhakrishnan speech, he stated that two aspects. I just want to request your attention on that aspect. That two important objectives of IFI, according to the inaugurator in 1952, national integration and world solidarity. National integration plus world solidarity. These are the two important motive, objective declared by our Vice President at that time. We will all think about it. And national integration is concerned, I would like to say the most important role can be played by artists as well as literary figures. I can say one thing. In 1947, our country was divided. You just think about the artists at that time, singers at that time.
poets at that time, if you take the stock of that, all the artists and singers went to Pakistan. 90% of them returned to our motherland within 2 or 3 years. This is the history, and I am not taking much of your time, but M.S. Subbalakshmi is concerned. She was a cure of Carnatic music, but at the same time, she was excellent in Shahanai. Shahanai is part of Hindustani music, but South Indian Carnatic music, as far as that field is concerned, she was expert in Shahanai. In our Muruganji's state, M.L. Vasanta Kumari, she was very expert. South Indian musician, belonged to Carnatic music, but she was an expert in Rudra Veena. So this is the tradition of our country. That is why national integration is concerned. We have a duty, and I am not finding fault with anybody, but bear it in our mind. Our country is moving fast in all fields of life. You see, our Indian people, Indian origin people, you take any country in the world now. In UK, I am remembering one aspect. Winston Churchill once told the world that Indian people are not competent, they are not able to rule, so not to give freedom to them. But now, a person who swear by touching Bhagavad Gita is the Prime Minister of UK. For the information of Govan people, I would like to say, the Prime Minister of Portuguese, his origin is from Goa. You take the case of Vice President of US, and Indian origin madam is the Vice President of US. That in a certain time, my state, Kochi was ruled by them. Dutch people, in Dutch parliament, now 2 or 3 Indian origin people are there. Yesterday, 2 days back, Indonesia, Bali, 92% of the population in Indonesia belongs to a particular community, and they are having only one God. Their commitment to one God. But you see, what is the name of the airline? Garuda Airline. What is the name of the bank? Kubera Bank. And what are the names of certain cities there? Bali and other things, Padaliputra and other things. I am not going to the detail. So, our information minister stated that we are fast running to Vishwaguru concept. Once upon a time, all European countries were in dark days. People are coming to our country for getting education and knowledge. So such a great country, once upon a time, about 500 years back, our country's name was Ratna Garbhayam Bharat, richest country in the world. Now, persistent effort on the part of our country to come up again to the stage, and according to me, Natya Shastra 64 items are there. If you closely analyze it, drama is there, Nadaga also, drama is there, film is also interpreted as part of that 64 Natya Shastra items of our history. I am requesting all should bear in mind, we can achieve our goal. The Vishwaguru concept is declared by Swami Vivekananda.
Vivekananda dreams are going to be true within short time. I am requesting your cooperation. I wish this IFI 53 all the best, and artists are concerned. I am wishing all the best for you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. Thank you so much, sir. Okay, now it is time to meet the man behind this mammoth festival. He turned days into nights and nights into days to make Asia's biggest international film festival this exciting. Please welcome on the stage the festival director, MD NFDC, Sri Ravinder Bhakar. How are you, sir? Namaskar. Good evening, everyone. Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan, Honorable CM, Sri Pramod Sawant, Honorable Union Minister, Sri Anurag Thakur, Minister of States, Sri Murugan Saab, Sripad Nayak ji, our Secretary, Sri Apurva Chandra, Chief Secretary Goa, all the steering committee members and the technical committee members, the distinguished jury members, and all my friends from the media, and all who have contributed in different walks of life to kickstart today's IFI proceedings. I have been given the opportunity and the responsibility to give vote of thanks on behalf of everyone and to everyone. I acknowledge the presence and contribution of all, and I am extremely thankful you all are here with us in such a large number. I am extremely thankful to our two visionaries, our Honorable Union Minister, who gave us vision to scale up the festival this time, and our team has put in days and nights efforts to make it bigger and bigger. Our other two key principals, Secretary Sir and the Chief Secretary Goa, who held us together throughout this festival period. I'll not take much of time, already we are running behind the schedule. I thank you all, everyone who have come in such a large number to inspire us, to encourage us and support us. Thank you, Jai Hind. तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का ये शानदार आगाज उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में भारत यूं ही विश्व सिनेमा में अपने सफलता के परचम लहराता रहेगा। आप सभी का इस फिल्म समारोह का जो आगाज है, जो जितना शानदार है, भविष्य की उम्मीदें उतनी ही उज्जवल है, बेहतरीन है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।